हाय हनीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आई मेड मेकअप। आज का वीडियो होने वाला है कुछ मेकअप के रिलेटेड DIYs और यू मे कॉल इट एज हैक्स। सो आर यू एक्साइटेड? आई एम एक्साइटेड टू। सो without any further delay, let's get started. But before that, if you are new to this channel, please do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon, guys. So let's get started. सोच रहे हो मैं किस में दिख रही हूँ? यह है हैंड मिरर जो मैंने बनाया है। Want to know how I made it? So let's see. आर यू लवर ऑफ विंग लाइनर लाइक मी? बट अब जब हरे में हो विंग लाइनर लगाना बहुत ही बड़ी टास्क होती है। आपके लिए मैंने लेकर आई हूँ ये DIY। विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। So I will show you the demo. This is what I have made.
this is what I have shown right now. So this is the DIY which I have made, like I have shown you right now in the video. It looks like this. So let's see how it works. So उसके लिए आपको चाहिए एक काजल. सो मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल. सो इसको आप ओपन करके इसमें अप्लाई करना है. अप्लाई कर दिया. सो मैंने अप्लाई कर दिया है. अब मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ आपको. जस्ट प्रेस इट एंड सी इट. Can you see? So I will apply it on the eye and I will show you. When you are in a hurry, use this hack and draw a wing liner and let me know in the comment section. Are you a lover of French nails like me? Are you worrying that you don't have white color nail polish? So this is for you guys. And no girl ever said, I don't like French nails. So here we go. This is the DIY for you honeys, those who like French nails. So let's get started. सो आज मैं लेकर आई हूँ ये 3 DIYs और मेकअप हैक्स फॉर यू. होप दे आर हेल्पफुल फॉर यू. एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने अब मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है. उसमें आप अलग अलग कैटेगरीज देख सकते हो. उसमें रिव्यूज़, मेकअप इंस्पायर्ड लुक्स, ऐसा कुछ बहुत सारे हैं. DIYs भी है, ईयरिंग्स के लिए, ज्वेलरी की ट्यूटोरियल्स है. सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट. Thank you so much for watching honeys. Please do subscribe to my channel and don't forget to like and share with your friends and family. So see you in my next video honeys. Until then, be positive and be happy.